Good morning to all of you. Today's my video lesson is on general principles and processes of isolation of element, part 5, and subtopic is refining. So friends, you know there are main 3 processes involved in metallurgy. First one is concentration of ore, second is reduction of metal oxide, and third one is refining of metal. So this is the last process, and during refining we refine the impure metal to pure by so many methods. So first method is your distillation. सो बच्चों आपको पता होना चाहिए डिस्टिलेशन बहुत ही आसान है कि इन डिस्टिलेशन इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन इज इन्वॉल्व. इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. जैसे आप छोटे क्लास में पढ़े हैं वैसा ही है. तो वैसा मेटल जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, metals having low boiling point can be refined by the process of distillation, right? As for example, zinc and mercury can be refined by the process of distillation. Okay friends, now second is your liquefaction. In liquefaction, an impure metal is purified by using liquefaction, but there is slightly difference between melting point of impurities and metal. So in this process there is sloping surface is prepared, and metal with impurities is put at the surface. Suppose black color is metal and red color is impurities. Now if metal has boiling point 90 degrees Celsius and impurities has boiling point 95 degrees Celsius, if you heat this mixture, or you can say impure metal, up to 90 degrees Celsius, so definitely metal melts and it comes down because surface is slanting, and pure metal collect here, and so on. You can say there is separation, or you can get pure metal, and impurities leaving behind here. Okay, so this is important process to refine impure metal to pure. And next one is your electrolytic refining. Third one is electrolytic refining. And in electrolytic refining you have seen that refining of impure copper to pure copper by means of electrolysis. ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, वही सेम प्रोसेस है कि जो भी मेटल होंगे वो डिपॉजिट होंगे
कैथोड पर डिपॉजिट होंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट वन इज योर जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग, राइट। Zone refining process, it is based on principle is that impurities are more soluble in molten stage than solid state। and you remember कि generally semiconductors like germanium, silicon, boron, gallium, indium, etc. are refined by this method। बच्चों, जोन रिफाइनिंग मेथड में मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। एक्चुअली इसमें हम जर्मेनियम या कोई भी सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर होता है उसको एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं। We put the rod in inert atmosphere and moving heater is fitted। ये देखिए आपका मूविंग हीटर है, ये हीटर को मूव कराएंगे तो ड्यू टू हीटर ये पोर्शन क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। एंड प्रिंसिपल इज दैट कि इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉलेबल इन मोल्टेन स्टेज, तो मैक्सिमम इम्प्यूरिटीज ये मोल्टेन स्टेज के साथ क्या होएगा भाई, आगे बढ़ेगा एज हीटर मूव्स। एंड वी डू इट बाय मेनी टाइम्स, अगेन एंड अगेन हीटर को हम मूव कराते हैं। तो एट द एंड मैक्सिमम इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ रॉड, राइट। एंड इफ इन दिस कंडीशन इस मेटल रॉड को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, तो रिमेनिंग मेटल जो होगा दैट इज प्योर। सो ऑन थ्रू जोन रिफाइनिंग metal is refined and generally semiconductors are refined by this method। okay, now next is now vapor phase refining। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में बच्चों इसमें दो कंडीशन होना चाहिए कि फर्स्ट वन इज मेटल शुड form volatile compound in presence of reagent। एक कंडीशन तो ये है। एंड सेकेंड कंडीशन ये होना चाहिए कि दिस volatile compound should decomposes to get the metal again। and principle is that, principle क्या होगा इसका, principle is impurities are more soluble in vapor phase, right।
तो इन वेपर फेज रिफाइनिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for examination point of view, and there are two methods regarding it. First one is your Mond process. Mond process for refining nickel. It's very important. So in this process, nickel is heated with carbon monoxide and temperature is about 350 Kelvin. So it forms complex, volatile complex is there, NiCO whole 4. So you take here 4. This is carbon monoxide. आप इसको पढ़ेंगे, ये complex compound है. This is tetra carbonyl nickel. Tetra carbonyl nickel 0. Oxidation state of nickel is 0. Right. Now you observe here. This nickel is impure and impurities does not form any compound with carbon monoxide. Only nickel forms compound with carbon monoxide. So definitely you can say this nickel is pure, that forms compound with carbon monoxide. Again, NiCO whole 4 tetracarbonyl nickel decomposes at higher temperature. It's about 450 Kelvin. It decomposes into nickel plus 4CO, and this is your pure nickel. So on, refining of nickel is done by this process. And second process is your Arkel method. Sorry for interruption. Second method is your Arkel method for refining zirconium and titanium. So same process is there. Zirconium is first treated with iodine to form volatile compound ZrI4, right? And this is your pure zirconium here, pure. This is impure. Now this ZrI4 zirconium tetraiodide is heated, then it decomposes into zirconium plus 2I2, and you will get the pure zirconium here, right? So these two methods are often asked in CBSE board. So student, always remember these two methods. Okay friends, now next is chromatographic method. And friends, this method is based on principle that different adsorption capacity to different adsorbent. इसमें बच्चों हमें ये देखना है कि सपोज आपको कोई सॉल्यूशन है, आप सेपरेट करना उसको, या कोई इम्प्योर मेटल है उसको सेपरेट करना है, तो सबसे पहले हम एक सॉल्वेंट लेते हैं. वी यूज सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू मेटल हैविंग इम्प्योरिटीज.
ये सॉल्वेंट में क्या होता है कि डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन कैपेसिटी इज देयर। इस सॉल्वेंट में जो प्योर मेटल हों और जो इम्प्रिटीज होगी, ये दोनों का एडजॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होगा। डिफरेंट एडजॉर्प्शन कैपेसिटी इज देयर and due to that it forms different color band, right? It's a type of column chromatography. अब इसमें जो कलर बैंड बनाते हो सकता है इट में भी कलर बैंड ऑफ impurities, and this is pure component, you can say component. It's a metal, it's not appropriate, you write component, right? Now you can separate it by separating funnel. Actually this method, it depends on the nature of solvent and the material you have to purify, right? So on you can separate by this method, and its principle is important. Okay friends, so on this chapter is almost finished. Thank you very much.